From Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of culture, tradition, languages and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides in the path of development. Hello, I'm your host Yeshi, and today in our episode of My India, we bring you some of the stories that will give a glimpse of our country's diversity. With the country battling the second wave of the COVID-19 pandemic, both the authorities and the citizens are doing their best to fight against the virus and help the needy amid these tough times. So today, in our episode of My India, we will have a look at two such examples where people have gone an extra mile to lend a helping hand to the commoners. Difficult times, like that of the pandemic, need collective measures of the authorities and the citizens to bring the country out of the situation. While the authorities are working overtime to help the people fight the second wave of a deadly virus, a number of individuals and organizations are also coming up with the ways to educate the citizens about the virus. Extending a helping hand in such a scenario is Ashok Kurmi from Mumbai city of Maharashtra, who has been disinfecting a slum with a surge in COVID-19 cases in the city. मैं अशोक कुर्मी हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। पिछले 14 सालों से काम करता हूँ। सोशल वर्क मेरा पैशन है। तो कोविड कॉल में जो पिछले लास्ट 2 ईयर्स से कोविड कॉल जो चालू है, ऐसे ही कोरोना की बीमारी के चलते अलग अलग माध्यम से बच्चों को, बड़ों को जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स रेगुलेशन दिए जाते हैं, बच्चों को अलग अलग रूप में जाकर उनको अवेयरनेस देते हैं, मास्क लगाने के लिए, हाथों को सुरक्षित रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं जो जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। बच्चों के बीच में जाकर, बड़ों के पास जाकर अलग अलग रूपों में, जैसे जोकर का ड्रेसअप है, जोकर के ड्रेसअप में जोकर इज़ नोन फॉर टू हैप्पीनेस, बट समय ऐसा है कि जोकर भी लोगों के बीच में जाके बोल रहा है कि समय हैप्पीनेस का नहीं है, सुरक्षा रखें और सुरक्षित रहें। Kurmi has disinfected various homes in the slum along with handing out masks to children of the area. Working with a pharmaceutical company, Kurmi has made it his goal to educate both adults and children on how to stop the spread of coronavirus. Meanwhile, a street play was organized in Poonch district of Jammu and Kashmir by the Indian Army for spreading coronavirus awareness among the commoners. आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसका मोटो यही था कि लोगों को अवेयर करें, क्योंकि सुनते सब है, करता कोई नहीं है। सुनने में सबको आ ही गया होगा कि म्यूटेंट फेस चल रहा है कोरोना का, और हमें सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जो कि लोग नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। यहाँ की जो एसोसिएशन है, सब ने ऑफिशियल लेटर्स निकाला है कि हमें प्रिकॉशन फॉलो करो, नहीं तो फ़ाइन होगा या ये होगा, फ़ाइन होगा, मतलब आप क्राउडेड प्लेस में जाओगे, स्पिट करोगे कहीं पे अननेसेसरी या कुछ भी। लेकिन ऐसा है कि लोग तब भी अवेयर नहीं हो रहे, तो मोटो यही था कि हम एक स्किट वगैरह रोल करके लोगों को अवेयर करें। In today's scenario, almost every individual in the country is contributing its bit to help the country fight the deadly virus. India is an epitome of brotherhood with different communities residing together in complete harmony. This sense of amity was visible in Srinagar district of Jammu and Kashmir, when one religious community helped in performing the last rites of a person belonging to another community. Take a look. Hundreds of people, mostly Muslim, recently gathered at the home of Kashmiri Pandit V.L. Vishen, who is a principal of Kasset School in Karannagar area of Srinagar, to condole the death of his wife, Raj Dulari Vishen. Even though belonging to other community, they did all the arrangements of funeral ceremony as per Hindu rituals, presenting a beautiful picture of Kashmiriyat, which signifies the centuries-old indigenous secularism of the land of Jammu and Kashmir. Though Raj Dulari has lost the battle of life,
But for her family and neighbors, she was a true fighter because during the tumultuous year of 90s, when all pundits were leaving Kashmir due to militancy, she supported her husband and decided to stay back with her Muslim brethren. 90s में उसने सारी ज़िंदगी मेरा साथ दिया। 90s में जब सारे कश्मीरी पंडित भाग गए, वो मेरे साथ थी और उसने मुझे साथ दिया। उसकी वजह से ही मैं बैठा रहा, क्योंकि उसका सपोर्ट बहुत था। और यहाँ के लोग जो है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और अगर उनका साथ ना होता तो मैं कहाँ बैठता यहाँ पर। और इस वक्त भी सारे हमसाया मुसलमान भाई, मेरे स्टाफ जो सारे ही मुसलमान हैं, मेरे पीछे खड़े हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। I want to express my gratitude to the people of Kashmir, because of which I stayed here. The love that showered on me. मुझे ऐसा लगता है कश्मीर जैसा कहीं जगह नहीं है और कश्मीरी जैसे लोग कहीं नहीं हैं। Besides making all the arrangements, Muslims also helped in carrying the body of the deceased to the cremation pyre. They said she has always loved them like her children, and they too have always respected her like a mother. ये हमारी माँ जैसी थी। 25 साल से हम इनको जानते हैं। मैं 25 साल से यहाँ पे इनके पास काम करता हूँ एज टीचर। जो अभी आपने देखा प्रोफेसर सीएल विशन साहब, वो हमारे हेड हैं। उनके अंडर हमने 25 साल से काम किया है। तो ये जिनका देहांत हुआ है, ये हमारी माँ जैसी थी। हमें अपने बच्चों की तरह इसने पाला है, हमसे प्यार किया है। तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ इस घर का नुकसान नहीं है, ये हमारा भी नुकसान है। It's due to the courage showed by a woman at a time when others decided to quit, that today all her neighbors, no matter which community they belong to, came to attend her funeral ceremony and bid her final goodbye. Now, a roundup of some of the major stories that made news recently. The capital city New Delhi opened up several makeshift vaccine centers at local schools as the city began vaccinations for the people in the age group of 18 to 45 years old amid daily surging coronavirus cases across the country. New Delhi's Deputy Chief Minister said the government plans to have at least 300 schools converted into vaccine centers soon. पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों, और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। With foreign aid continuously reaching the country and the commencement of the largest vaccination drive, India is slowly trying to revamp its fight against the second wave of the pandemic. Authorities in India's western Nagpur city converted a train into a 176-bedded isolation facility in a move to provide aid to the country's health system. 11 train coaches have been converted into isolation wards, and there is one separate coach for doctors. 16 patients can be accommodated in each coach, which is equipped with 2 oxygen cylinders and 9 air coolers. Moreover, sanitization and waste disposal arrangements have also been made in the coaches. With additional burden on the hospitals in the country's main cities, some regions are coming up with makeshift solutions to help the system from battling the pandemic. Zoo authorities have made special arrangements to protect the animals of Machia Biological Park from the rising mercury in Jodhpur city of India's desert state of Rajasthan. The animals are given showers twice a day as the mercury levels go as high as 40 degrees Celsius. Even air coolers and fans have been installed in cages so that animals like lions and tigers don't lose their cool. सभी के एंक्लोजर्स के अंदर 2 तरह के पॉन्ड बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और सभी पानी से भरे हुए होते हैं। अपनी इच्छा से कभी भी जाके उसमें जाके बैठ सकते हैं, उसमें जाके नहाने का आनंद ले सकते हैं। दूसरा,
जो ज़्यादा गर्मी होती है तो दोपहर में 3-3:30 बजे के आसपास अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस टाइम पर इनको एक बार पानी का शावर दिया जा सकता है, जो कि केयर टेकर करता ही है। Pits have also been created and filled with water, where some animals rest when they struggle to cope with the heat. It has been said that humanity is the virtue that stands above all religions and caste. Examples of citizens who have been doing noble deeds amid tough times like the COVID-19 pandemic could be found in every nook and corner of the nation. So today, we take you to meet one such citizen from Mumbai city of Maharashtra who is helping the needy amid the pandemic by distributing free food. Feeding a hungry person is nothing less than a virtue. With the coronavirus pandemic putting up many challenges in front of the authorities, feeding the hungry remains a tough one. Extending a helping hand in such a scenario is a Samaritan from Mumbai city of Maharashtra named Rajiv Singhal, who is providing free meals to home quarantine COVID-19 patients who are facing the food crisis. एक तो घरेलू खाना है, पूरा घर में बनता है। जैसे अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटियाँ खाना बनाती हैं, वैसे ही खाना हाथ से बन के जाता है। और जो खाना मैंने खाया है मेरे घर में, मेरे परिवार ने खाया है क्वारंटाइन के टाइम में, वही खाना हम सबको भिजवा रहे हैं। Singhal is a businessman and he has been delivering home-cooked food to around 200 households twice a day since the second wave of the pandemic started hitting the state. Singhal himself faced scarcity of food when he was quarantined due to COVID-19 in September, and this became the reason for him to take such an initiative. He has hired Asha Kitchen Food Service in Malad, Mumbai for making food. Asha Kitchen is owned by Asha Bhartiya, who provides food parcels. सब हम फैमिली मेंबर्स ही बैठ के पैकिंग करते हैं उसको, और फिर एक एक टिफ़िन हम पैक करके पूरा एक चार्ट बनता है, उसमें हम लिख के प्लास्टिक बैग्स में एक एक जन का टिफ़िन डालते हैं और कोरियर वालों को बुक करते हैं। उसके बाद वो आके एक एक डिलीवरी हमसे लेके जाते हैं और इस तरीके से उन तक खाना पहुंचता है। Singhal provides food packets to a family for a period of 14 days, and after their quarantine periods ends, new families are added to the list of beneficiaries. At present, when the whole country is in the grip of the pandemic, in such a situation, a number of people are coming forward and extending their helping hand to those in need. Next, we take you to Jammu and Kashmir, where the administration is searching out new ways to revamp the badly hit tourism industry of the territory. They have recently identified some spots in Rajouri district for developing eco-tourism, enabling tourists to come out from their four walls of their houses and spend some time in the lap of nature. The Forest Department of Rajouri seems to have found an opportunity out of adversity. Amid COVID-19, many city dwellers, realizing that they may be restricted to one place for a relatively prolonged period of time, are flocking to rural areas to self-isolate around nature. Using this opportunity, Rajouri's Forest Department has identified few spots like Dehra Ki Gali, Bimbar Gali and Shahadra Sharif for developing eco-tourism in the district. The idea is to enable tourists enjoy the forest atmosphere amid the pandemic, along with giving boost to tourism sector. अभी लास्टली 1-1.5 साल से क्या हुआ है कि टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी एक तरह से देखें वर्ल्ड ओवर बड़ा गिरावट आई है, लेकिन इसी में स्कोप हम इको टूरिज्म का भी देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल टूरिज्म तो नहीं चल सकता, लेकिन अगर इको टूरिज्म हम फॉरेस्ट की ऐसी वर्जिन साइट्स पे जा रहे हैं जहां आबादी बहुत कम है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है, वहां पे लोग अपनी फैमिलीज के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो ये माउंटेनियस रीजन है रजौरी बेल्ट का,
और इसमें ऐसे खूबसूरत काफ़ी स्पॉट्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे एरिया में यहाँ पे एक देरा की गली है, भिम्बर गली है, इवन शादरा का में लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए आते हैं। और इवन कि आप देखें कि अगर तत्ता पानी है टुवर्ड्स कालाकोट साइड, तो इन जगहों पे लोग जाके अपना एंजॉय कर सकते हैं फैमिलीज़ के साथ, और हम इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। Dehra Ki Gali is already famous among tourists for its nice weather and natural surroundings, including thick forests and an amazing view of nearby peaks. But to further enhance the beauty of this tourist spot, ornamental plants are being nurtured at the local nursery. These plants will be then provided to the district's forest department, who will use them for roadside plantation as well as to promote eco-tourism. इस साल हमने टंडवाल नर्सरी में इस फाइनेंशियल ईयर में 1,40,000 जो सैपलिंग्स है वो तैयार किए हैं। इसमें जो वैरायटीज़ हमने लगाई गई हैं उसमें चीड़ है, बहुनिया, आंवला, शीशम, हरड़, डेठा, बेड़ा, ये सब वैरायटीज़ जो हैं इस बार हमने टंडवाल नर्सरी में लगाई हैं, जिसकी कुल क्वांटिटी 1,40,000 सैपलिंग्स है। तो ये जो सैपलिंग्स है ये हम रजौरी रेंज ऑफ जो रजौरी रेंज ऑफ फॉरेस्ट डिवीज़न की उसमें सप्लाई करते हैं फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड साइड प्लांटेशंस, इको टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे DKG हमारा वहाँ पे हम इसकी प्लांटेशन करते हैं। For staying purpose, unique eco-friendly wooden huts have already been constructed at this beautiful tourist spot by the tourism department. Equipped with almost every essential facility, these huts will let tourists to enjoy their stay amidst wilderness and greenery. Moreover, to increase the inflow of tourists, the locals have also started turning their houses into a paying guest accommodation, further contributing to tourism sector. जो यहाँ के लोकल लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो हमारे लिए वो अगर अपने घर PGH में या अपने होटल्स में कन्वर्ट करते हैं या कुछ ऐसी परमिशंस लेके कमर्शियल परमिशंस लेके बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जितना वो एक्सपैंड करेंगे टूरिज़्म इंडस्ट्री उतनी बढ़ती जाती है। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है पब्लिक पार्टनरशिप पे हमारे साथ, वो हमारे साथ आएँ, जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर करवाएँ हमारी टूरिज़्म वेबसाइट पे, और अपना ये जो है हमारा टूरिज़्म का एम्पल स्कोप है। The Forest Department is also identifying some trekking routes in Rajouri so that tourists can enjoy springs, lakes and natural beauty. Investments like these being made to promote eco-tourism will not just glorify the offbeat destinations along with their rich culture and traditions, but also bring a revolution in the tourism industry of Jammu and Kashmir. Next, we bring you a few short stories about the recent developments and happenings from around the world in our new edition World in Focus. The cherry blossom or sakura marks the arrival of spring in Japan and the end of winter season. The Minato Mirai area, which is a modern port town in Yokohama City, is filled with cherry blossoms that bloom with background of sea and tall buildings. Viewing their scenic beauty from a boat is quite mesmerizing. The Nikurayama Asama Park, located near the foot of Mount Fuji, is blessed with abundance of natural beauty. The 5-storied pagoda and Mount Fuji are the main attractions at this park. Kawaguchi Lake is another popular destination surrounded with a number of beautiful varieties of flowers like tulips and Shiba Zakura or moss phlox, which is similar to the shape of cherry blossom.
next, we take you to Shibuya, city of Japan, where a toilet compartment has been established inside a public park. Designed by a renowned architect, this unique toilet project known as the Tokyo Toilet is operated by Nippon Foundation. Though it is transparent, but when anyone goes inside and lock it, it automatically turns opaque due to a special film used in its construction. ロックがかかっていない状態ですと中がスケスケの状態になっています。で、スケスケの理由としましては、中に人がいないかどうかっていうのを確認できる。プラス、中がきれいな状態であるかということを入る前に確認ができるようになっています。では入ってみます。このようにですね、ロックをかけていない状態だと公園だったり道の人だったり全てが外が見える状態になっていますし、外からも中が見える状態になっています。ではドアを閉めてみます。ロックをかけますと、外からも中からも見えない不透明な状態になります。The Tokyo Toilet Project aims to renew toilets at public park in Shibuya, city of Tokyo, in cooperation with famous and renowned designers, architects, and toilet companies. Dozens of black and red handprints over the walls of a cave in Mexico, believed to be associated with the coming-of-age ritual of ancient Maya, according to an archaeologist who has explored and studied the subterranean cavern. Maya are Mesoamerican Indians who occupied a nearly continuous territory in southern Mexico, Guatemala, and northern Belize. The 137 prints, mostly made by the hands of children, are more than 1200 years old. Ellos imprimían en las paredes sus manos en color negro. ¿Por qué? Porque el negro significa la muerte. Y eso no quiere decir que los fueran a matar, no. Era una muerte desde el punto de vista ritual. Luego, después de, no sabemos exactamente, después de cuántas horas, días, no sabemos realmente cuánto tiempo estaban en la cueva. Estos niños imprimían sus manos ya en color rojo, quiere decir guerra o vida. Entonces, ya estos niños salían a tener contacto con el resto de la sociedad ya de una manera segura. Even today, several million Maya continue to live in communities scattered around southeastern Mexican states like Chiapas and Campeche, in addition to Guatemala and Belize. Hundreds of boats lined up across Lake Geneva in an artistic representation of the border between Switzerland and France that runs for 59 kilometers down the middle of waterway. Vessels from yachts to rowboats took part in the event, for which more than 270 vessels signed up. The project was envisioned by Lausanne architect student Bastien Marzoli as a collective performance to reflect on the nature of the frontier drawn in 1963. During the experiment, he was perched at the top of a vineyard where he could see his brief alignment come to life. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@anin.com. I'm your host Yeshi, and it's goodbye from the entire production team.